Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 13, direct and inverse proportion. Now we are going to start a topic inverse proportion. लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम डिस्कस शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर डू दिस. On a squared paper, draw a 5 squares of a different sides and write the following information in the tabular form. Square 1, 2, 3, 4, 5. First column में length of the side L, perimeter P and ratio L by P. Area A and L by A. L by A means length upon area. So find whether the length of the side in direct proportion to the perimeter of the square and the area of the square. Question number 2. The following ingredients are required to make the halwa for 5 persons. Suji or rava 250 grams, sugar 300 gram, ghee 200 gram and water 500 ml. Using the concept of the proportion, estimate the change in the quantity of the ingredients to prepare halwa for your class. And third one, choose the scale and make a map of your classroom showing windows, doors, blackboard, etc. As example given here, look. The length of the wall is 5 centimeter. Here scale is 1 is to 200. We show the windows, both the side. On right hand side we show the blackboard and the width of the room is 4.5 centimeter. तो ठीक इसी प्रकार से आपको एक चूज करना है स्केल एंड मेक अ मैप ऑफ योर ओन क्लासरूम और आपको अपने क्लासरूम का एक मैप बनाना है जिसमें आपको विंडोज, डोर्स, ब्लैकबोर्ड ये सब दिखाना है. तो डियर स्टूडेंट्स, टेक अ फ्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस सो फार under direct variation. Do you think that they can be solved by unitary method? Now we are going to discuss inverse proportion. Two quantities may change in such a manner if one quantity increase, the other quantity decrease, and vice versa. For example, as the number of workers increase, the time taken to finish the job decrease. अब हम ऐसे रिलेशनशिप की डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें दो क्वांटिटीज हमें जो दी हैं, इसमें से किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ दूसरी क्वांटिटी हैं वो डिक्रीज होती हैं. बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होने के साथ टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब, काम पूरा करने के लिए लगता समय डिक्रीज होता है. सिमिलरली इफ़ वी इंक्रीज द स्पीड, अगर जो हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस डिक्रीज. तो स्पीड इंक्रीज करने के साथ जो समय लगता है गिवन डिस्टेंस को कवर करने में ये डिक्रीज हो जाता है. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लुक इनटू द फॉलोइंग सिचुएशन. Zahida can go to her school in 4 different ways. She can walk, run, cycle or go by car. Study the following table. Speed in kilometer per hour and time taken in minutes. If we walk to different ways, Zahida can go for a school in 4 different ways. If we select the walking, then speed in kilometer per hour is 3 and time taken in minutes is 30 minutes.
मतलब कि वॉकिंग करते हुए जब वो जाती है तो उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर और उससे समय लगता है 30 मिनट्स का। अगर वो रनिंग करती हुई जाती है तो इसका स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर और इससे समय लगेगा 15 मिनट का। अगर जब वो साइकिलिंग करती है तो इसकी स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर और उससे 10 मिनट लगेगा। और अगर जो वो बाय कार जाती है तो स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर और इससे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। So observe that as the speed increase, the time taken is cover the same distance decreases. हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है इसके साथ साथ डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम टेकन है वो डिक्रीज होता जाता है। एज जहेदा डबल हर स्पीड बाय रनिंग, टाइम रिड्यूस टू हाफ। जैसे उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है टाइम रिड्यूस होकर हाफ हो गया है। एज सी इंक्रीज हर स्पीड टू 3 टाइम्स बाय द साइकिलिंग, उसने अपनी स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया साइकिलिंग करते हुए, टाइम डिक्रीज इन 1/3, तो जो समय था वो 1/3 डिक्रीज हो गया। सिमिलरली एज सी इंक्रीज हर स्पीड इन 15 टाइम्स डिक्रीज टू 1/15, और इन द other word the ratio by which time decrease is inverse of the ratio by which the corresponding speed increases. So can we say that speed and time change inversely in proportion? Multiplicative inverse of the number is its reciprocal. Thus 1 by 2 is the inverse of 2 and vice versa. 2 multiply 1 by 2 is equal to 1 by 2 multiply 2 equal to 1. So now let's consider another example. A school wants to spend rupees 6,000 on mathematics textbook. How many books could be bought at rupees 40 each? And clearly 150 books can be bought. If the price of the textbook is more than 40 rupees, then the number of books which could be purchased with the same amount of money would be less than 150. Observe following table now. Price of the each book in rupees 40, 50, 60, 75, 80 and hundreds. And number of books that can be bought is 150, 120, 100, 80, 75 and 60 respectively. What do you observe? What we observe here? We will appreciate that as the price of the book increase, the number of books that can be bought. Keeping the fund constant will decrease. तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज होने के कारण नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट, जो हमें खरीदनी है, कीपिंग द फंड्स जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज हो जाएगी। रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ द बुक इंक्रीज व्हेन गोइंग फ्रॉम 40 to 50 is 4:5, and the ratio by which the corresponding number of the books decrease from 150 to 120 is 5:4. This means that the two ratios are inverse of each other. Notice that the product of the corresponding values of the two quantities is constant, that is 40 multiply 150 is equal to 50 multiply 120 is equal to 6,000. If we represent the price of the one book as x and the number of books bought by y, then x increase, y decrease and vice versa. It is important to note that the product xy remains constant. We say that x varies inversely with y and y varies inversely with x. Thus, two quantities x and y are said to be vary in inverse proportion. If there exists a relation of the type xy is equal to k between them,
the k being the constant. If y1, y2 are the values of y corresponding to the value x1, x2 of x respectively, then x1 y1 is equal to x2 y2 equal to k, or x1 upon x2 is equal to y1 y2 upon y1. So we say that x and y are in inverse proportion. Hence, in this example, cost of book and number of books purchased in a fixed amount are inversely proportional. Similarly, the speed of vehicle and the time taken to cover a fixed distance change in inverse proportion. Think of more such examples of pairs of the qualities that vary in inverse proportion. You may now have a look at the furniture arranging problem stated in the introductory part of this chapter. Here is an activity for better understanding for the inverse proportion. तो आगे हम देखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन को लेकर एक और एक्टिविटी, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल यहाँ तक एक्सप्लेनिंग लगे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 रिलेटेड एक्सप्लेनिंग वीडियो पार्ट 2 को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।